Okay, I hope my screen is visible to everyone. Okay, let's move forward. So today, guys, as you all know me, right? Yesterday, I think all of you were there. So I'm not going to introduce myself again, but just for those new people, like I'm Viken Patel, and I'm a director of marketing at Logicwind. And today I'm going to talk about Google Analytics. So yesterday we discussed about SEO, and along with SEO, I think reporting is the most important part, and you will be able to understand a lot more using Google Analytics on what exactly is happening on your website. So this is a free tool from Google. So let's understand how it works, and again I'll talk more practically. I'll show how analytics looks like and what kind of things you can see और क्या क्या आप देख सकते हो वहाँ पे, right? So again, as tomorrow I'll be speaking English plus Hindi, so everyone will understand. So again, as I mentioned, I'll be teaching you all the basics of Google Analytics, and that too practically, right? So here is what you will learn today. What is Google Analytics? Why choose Google Analytics? Why should you go for it? How to set up the analytics. We will see from start to end the process of setting up analytics and the reports, like how to read reports or what are the parameters that you should be looking uh, in order to understand like वो कैसे work करता है, right? So simple, what is Google Analytics? I think Google Analytics is analytical tool from Google that tracks all the website and application, right? So when I say all the website, wherever you have put the code, if you have put single code on multiple website, Google Analytics will track all those websites. Okay. So likewise, it track or website or application, right? When I say application, it could be mobile app also. Okay. Uh, so here is the basic detail like of what kind of data you will see in the analytics. So total visitors on the web pages. So if you have implemented it correctly, तो आपको जो भी visitors है जो visit कर रहे हैं website pages, आपको वो visitors का detail मिलेगा. You will also know from where these visitors come from, right? So आपकी वेबसाइट पे विजिटर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? So most probably आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे गूगल से, which is organic, पेड एडवर्टाइजमेंट से, फेसबुक एडवर्टाइज कर रहे हो तो वहाँ से आएंगे, गूगल एड्स कर रहे हो तो वहाँ से आएंगे, राइट? देन ईमेल से आ सकते हैं, देन अगर कोई व्हाट्सएप कैंपेन कर रहे हो वहाँ पे यूआरएल भेजो, वहाँ से आ सकते हैं. देन रेफरल हो सकता है, किसी और की साइट से आपकी साइट पे लोग आ सकते हैं, राइट? सो देर आर मल्टीपल वेज कि जहाँ से आपको विजिटर्स आ सकते हैं, और वो सब वेज यू कैन चूज. Okay. Further, how much time visitors spend on the website, I think you can also learn that. मतलब कितना time लोग spend कर आपके web pages पे. That is also an important part of it. Apart from that, visitors क्या क्या activity करता है, कौन से पेज से कहाँ जाता है, वो सब भी आप ट्रैक कर सकते हो. एंड कौन से स्टेज पे आपका विजिटर आपको छोड़ के जा रहा है, राइट? तो वो सब भी आप ट्रैक कर सकते हो. So there are not only this, but there are so many things that you can learn. Google Analytics is very wide tool, but in order to understand the basics, I think these are the good information that you should start. So this is just for basic कि आपको ये सब basic चीजें पता चलेगी along with few other things. So we will look into different parameters practically when I'll show you the analytics account. So क्यों choose करना चाहिए? Why you should choose Google Analytics? Because first of all, it's free from Google, right? You don't have to pay anything. There are tools available similar to analytics or more advanced tools which you have to pay for, but it's free, so you can use analytics. Then the insight that you will get uh, फ्रॉम द एनालिटिक्स, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केटिंग कर रहे हो या एसईओ परफॉर्म कर रहे हो, या आपको आपकी वेबसाइट प्रमोट करना है, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, राइट?
So you have to understand the user's behavior. User आपकी वेबसाइट पे आके क्या करता है, अगर आपको पता है तो वो सब इंसाइट आपको हेल्प करेगी आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको ज्यादा सेल करने में. So that is why the insights that you will get are really important for marketing or SEO or whatever you are performing, right? Uh, you will also learn के people लोग कैसे use कर रहे हैं, right? How people uses your website, and from there you can drive something. उसके अलावा ओवरऑल जो मैंने बताया SEO होगा, सोशल मीडिया से भी लोग आएंगे तो you will get to know. So that is why like understanding the whole marketing that you are going to do for your website or your product and service, I think analytics is the most important part. So now let's look at how to set up Google Analytics account. Okay. So I'll set up one dummy account for now, right? So that you will understand कि कैसे set करना है from start to end. Okay. I think I'm already logged in. Just a second. I will share my other window in incognito window or some other window so that you will know कि कैसे करते हैं. Just a second. Okay. Can you? I hope you are able to see my screen now, right? Okay. So when you go to analytics website, you will see a lot of things, right? So now what you need to do is you need to click on start measuring so that it will allow you to set up a new account. Okay. Uh, or you can directly open like analytics.google.com/analytics. Okay. So now let's name an account. So maybe I'll name myself for now, or maybe I can do anything. I can add my website's name basically so that you can identify कि कौन सा ID और कौन सी website के लिए आप कर रहे हो. Then these are all promotional data like what you want. Okay, you can tick or you can untick depending on what kind of emails you want to get. Okay, then I'll click on next. Then I will add a property name. Again, property name is could be your website name once again. For example, if I add site name and I'll select the country, and I'll select my currency, and again I'll click next. Now they will ask some more details. Either you add them or you can just skip this if you don't want to add. Okay, and then I'll click on the create. You have to accept the terms and condition, select the country, and I accept. So we are creating the analytics account right now. Again, they are asking for email confirmation. If you want, you can get emails from analytics. So now our first level of Google Analytics is set up. As let me tell you upfront that there are two versions of analytics. One is the previous version 3, which is ongoing, and Google has recently come up with the Google Analytics 4, which is a new version. So whenever I created an account, it directly go to the new version. So either you can uh, move old version to new version, or vice versa. Like you can just uh, simply switch between those version. But the major all the data will remain same, but they have
presented in a different way with some more additional data. Okay, I will explain you later on what exactly is this. But let's focus on this step right now. So this is how I have created my account. Okay, and then I will choose my platform, whether I'm doing it for web means the website, Android app or iOS app, right? So as we are doing it for web, I will select the web and I will select my website name. For example, site URL, name, the name, select this enhancement measurement so that Google will automatically track many things, and I will create this string, right? So now I got the measurement ID, which is G, then there is a number. Okay, I can just copy this ID and put it on my website, or there is an instruction available like how do you want to put it. So there is a way, there is another tool called Google Tag Manager. You can use that. If you are using that uh, tool, then you just need to copy this ID and use it over there. Or if you want to put a whole code on your website, then you have to copy this code, right? And put the whole code on your website. That is how it works. Okay. So now this is the simple method of creating an account. Now you have the code. So what this code does is, if whenever we put this code on the website in the head section of the HTML, Google will track all the data that is coming to your website. Okay, and if you have a WordPress website, then there are plugins which will help you add the code in the header portion. So one such plugin is insert header and footer. Yeah, this is the one. Or if you have HTML website, static website, then you can just go and use the code and simply put this code on your website. Okay, so this is how you can create. Uh, this is how you can create the website. Okay, I mean analytics account and put it on the website. आई होप सबको क्लियर है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन श्योरली आस्क. इज देयर एनी कंफ्यूजन के कहाँ पे कैसे ऐड करना है वेबसाइट में? You can drop a comment or you can also speak if you want. Yeah, anyone, guys, or I should I move ahead? हेलो सर. Yes, sir. Yes, yes, please. सर आई वांट टू आस्क कि जो वेबसाइट है हमारी, लाइक इट कैन बी गिटहब वेबसाइट आल्सो, हेरोकुआ. Sorry, कौन सी वेबसाइट? गिटहब वेबसाइट. GitHub. Okay. So website which we used to static website which we used to host on GitHubs and Heroku, or it can Right. only be the website with the domain .com. Yeah, so if you have a GitHub website or any kind of website, you must be doing some code, right? Yes, sir. So whenever you do coding, you use HTML, right? Yes. Head section would be there. So just copy this code that you are seeing on the screen and just put it into the head tag of all the pages, okay? And I think that's it. You are done. That's how you implement the code on the website. Okay, sir. So either you put it into HTML. If you are using WordPress or any other content management system, then there is a provision like you can add plugin, you can add you can even add into the code if you know the website code. Okay. Okay, sir. Yeah. Anyone else? Somebody was speaking, guys. Anyone else, or shall I go ahead?
All right, let's move forward. Um, so this is how we set up the analytics account. Okay, and as I mentioned, in head tag you need to put the code. You can also put it into the footer tag. It's okay if you put it into the footer, but it's important that you put it into the head tag, because sometimes some script might not be loaded, or there might be some problem when you put it into the footer. But that will also work. You can just give it a try. There is no hard rules. Okay. So now let's move forward and understand the this old version of analytics first of all. Okay. Uh, so just giving you a little bit brief on old version. So this is the old version. When I say old version, there is a different kind of tag called real-time audience, behavior, conversion, and many such things. Okay. So why the creating a goal is important. So आपके पास कोई वेबसाइट है, नाउ वेबसाइट में आपके फॉर्म्स होंगे, राइट? आइदर आपने कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म रखा होगा, so कोई फॉर्म भरेगा तो आपको पता चलना चाहिए कि हाउ मेनी पीपल हैव फिल्ड द फॉर्म, या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको परचेज कितने आए वो जानना है, राइट? सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने लोगों ने खरीदा है या कितने लोगों ने फॉर्म भरा है. सो अगर फॉर्म भरा है तो वी कॉल इट एज अ लीड, अगर परचेज किया है तो वी कॉल इट एज अ सेल्स, राइट? सो ये जानने के लिए गूगल एनालिटिक्स में वी हैव टू सेट अप अ गोल. Okay, after we set up the Google Analytics account, I think you can set up the goal. So I'll give you a little bit brief on the old version. Here there is a icon of setting. This is called the admin of the Google Analytics, and you will see these three different tabs. This is a main account, this is the property, and this is a view. So now what is the difference? Property could be multiple in under one account. Okay, if I have this one account and I can create two three different properties, like as you can see here there are different properties, right? So I can use this code on website, I can use this code on application, I can use this code in a different way. Okay, so this is the property that you can create, but in general practice is कि आप एक ही property बनाओ. अगर एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, अगर आपकी एप्लीकेशन है जिसको आप अलग तरीके से ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी बनाओ. ठीक है, दैट इज हाउ प्रॉपर्टी वर्क्स. उसके अलावा देर इज अ व्यू. व्यू क्या है कि इफ यू हैव दिस वन प्रॉपर्टी, अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट में आपने ये कोड रखा है, तो इफ यू वांट टू ट्रैक कि वेबसाइट का एक पोर्शन है जैसे कि ब्लॉग है फॉर एग्जांपल, ठीक है? सो अगर ब्लॉग को अलग से ट्रैक करना है आपको, तो यू कैन क्रिएट अ व्यू फॉर ब्लॉग, जहां पे आप एक कंडीशन लिखोगे और वहां पे सिर्फ ब्लॉग वाली यूआरएल ही ट्रैक होगी, और जो मेन व्यू है जहां पे सारी यूआरएल ट्रैक होगी, राइट? सो यू कैन फिल्टर योर ट्रैफिक और उसके हिसाब से आप व्यू बना सकते हो. व्यू बनाने के लिए यू हैव टू गो टू व्यू सेटिंग्स. ठीक है, और यहाँ पे यू हैव टू एड अ व्यू नेम, यूआरएल. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लॉग के लिए बनाना है तो आई विल डू दिस. ठीक है, so those URL, no, I mean this is just a URL, but condition will be later on. So for example, I'll do this blog. Then after I will select everything and I will save this view. Okay. So I already have a lot of views. I'm not doing it. But let's say if I'm on this web view and if I go to filter, so now I can create different filters. For example, if I want to separate the traffic of blog, okay, we are taking an example. So creating a new filter, I will say blog traffic, for example. And then I will select include only traffic from to the subdirectory. So blog is my subdirectory, right? So I will say begins with, okay, and then I will put blog. So now what happens is this is a website called contactbook.app. Now, whenever you have
URL which has the blog as a subdirectory. It means that contactbook.app slash blog slash, okay, in that case, all the subdirectories traffic will be considered in the this web view because I have filtered it out. Okay, this is how you can take create a filter, and then just to make sure कि ऐसा traffic आ रहा है कि नहीं आ रहा, you can click on verify traffic. So now as you can see कि there are traffic around this, ठीक है, which will be counted. Okay, all right. So these are all excluded traffic that they are showing, but this is how it works, and when you will save it, it will work. Like all the blog traffic will be tracked in this particular web view. Okay, by default in the view, all the traffic will be tracked. Okay, and if this is the main thing of these three things that you have to take care. There are a lot many things you don't have to worry about. So now अगर आपको जब भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है आपने कोड कॉपी नहीं किया है गलती से, so you can go to tracking info and tracking code and you will see the code here. So now as this is the old version 3 analytics, this is ID is starting with UA, while in the new analytics ID was starting with G. Okay, so it's a different code. So if you are creating this account, then you copy this code. It is similar to the last the code I shown you. It's just a different version, nothing else. Okay, fine. So the next thing I was talking about is goal. Goal means there are different goals I already have created. Okay, so let's take an hypothetical scenario right now that there is a contact form on the website, and if I want to create a goal for the contact form, then I will come here, I will add a new goal. So when I will add a new goal, I will use mostly the custom so that I can define whatever I want to define on my own. Then I will name it as a contact. Then this goal ID will be this, it is by default, and there will be a destination URL. I selected destination URL because after filling the contact form, people are going to thank you page. Okay, so I want to track how many people have filled the form. If I want to track that, in that case मुझे इतना पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने के बाद कहाँ जा रहे हैं. So अगर वो लोग थैंक यू पेज पे जा रहे हैं तो इट्स इजी फॉर मी. तो मैं यहाँ पे कंडीशन रखूंगा कि destination is equals to, let's say, thank you. Okay, so ऐसा मैंने रखा. इट मीन्स दैट यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कितने लोग थैंक यू पे गए, और जितने भी लोग गए तो ये गूगल एनालिटिक्स विल कंसिडर इट एज अ गोल. तो हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है. राइट, अगर आपका थैंक यू पेज नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप बनाओ, बट इन केस नहीं है तो यू कैन यूज अदर ऑप्शंस ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन यूज इवेंट. सो वेन एवर समबडी इज सबमिटिंग द फॉर्म, तो वहाँ पे कोई, दिस इज मोर टेक्निकल. ओके गाइज, अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो बटन क्लिक पे आप कोई इवेंट भी कॉल कर सकते हो. व्हेन आई से इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, या जो भी कोडिंग में जावास्क्रिप्ट में इवेंट होती है वो इवेंट भी कॉल कर सकते हो. सो अगर वो इवेंट वहाँ से कॉल होती है तो वो इवेंट हम गूगल एनालिटिक्स में पास कर सकते हैं, एंड देन वो इवेंट को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं. बट दैट विल बी टू टेक्निकल फॉर most of the people. If you are technical and if you want to do it, but I always recommend we use thank you page, and whenever we use thank you page it is easy because somebody is going to thank you page. Okay, so now there is another option called value. Value means what, कि अगर एक जन ने फॉर्म भरा है तो हम उसका वैल्यू कितना करते हैं. फॉर एग्जांपल एक लीड आई तो वो लीड मेरे लिए लेट्स से $100 की है या $200 की है. राइट, if I want to add, I can add it so that I can also see कि भाई 100 लोग आए $100 में, तो it would be around $10,000 value that I got from the website, right? If you want to track, or it's optional, you don't need to do that. If you want to set the funnel, so now what is funnel? Funnel is something where you can track how many people have come to
home page. After home page, they go to, let's say, pricing page. After pricing page, they go to contact form, and then they have filled the contact form, right? If you want to see this funnel, then what you can do is you can add those pages here. For example, I will add home and then slash. Slash means the domain name slash. Okay. I don't need to add a domain name here. I just put the slash because it's a home page. Then pricing, and then I'll say pricing, right? And then let's say contact, and it's a contact. Whatever is your name, paid name, right? So now don't keep it required, otherwise it will track only when this flow will remain. Uh, if this flow will be there, then only it will track. So don't keep it required. This is just to set up कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. Okay, and then save it. Okay, this is how you can create the goal, and this is how you will be able to see the goals. Okay, I'm not saving this goal, but I'll show you how it looks. I will also talk more about goals on later stage, but I can see that how many goal completion are there. So 49 total goal completion in the particular time range. Okay, I will give you the overview later on, but I'm just showing you that whatever we did in the backend, how it will be impacting on the analytical part. Okay, so this is how you can create the goal. Okay, it is very important to create the goal. Now let's look at the whole analytics reports, how it looks and what are the challenges. Is everyone clear about the goal? Goal कब create करते हैं? All right, so I'm on the home page, or you can say dashboard of the Google Analytics. यहाँ पे आपको अलग-अलग data दिखेंगे, right? So first data is user. How many users have come to your website in last 7 days? यहाँ पे there is a filter called last 7 days. You can select different filters. Like if I can see today's data, if I select today, I'll show that आज इतने लोग आए हैं. I'll see 28 days data or 90 days data also. Okay, so this is how you can change. So I'll explain you what is user. User are the unique people that have come to your website. Okay, for example, there are sessions called there is a term called session which is 12,000. Okay, so अगर 12,000 session है, it means that एक user ने multiple बार भी यहाँ पे आए होंगे. In general, session will be created after, if you are active on your website and if you go ideal, मतलब आपने वेबसाइट यूज करना बंद कर दिया या वेबसाइट बंद कर दिया और वापस ओपन किया, तो whenever you open the website once again, it will count as a new session. Okay, so one user can be there for multiple times, so that is called session, or it is also called traffic. And users are the unique people who have come to your website. So approx 9,000 people were there in last 90 days, and in 9,000 people have visited the website 12,000 times. Okay, this is what is called. Then there is a term called bounce rate. So bounce rate is something which let me explain you in a different way. So if somebody is coming to your website, कोई ने किसी ने वेबसाइट विजिट किया आपका, और विजिट करने के बाद वो वापस चला गया थोड़े टाइम में, ठीक है, वेबसाइट से बाहर चला गया, आपके होम पेज में आया और थोड़ी देर में वापस चला गया, और कोई और पेज भी विजिट नहीं किया उन्होंने, राइट? सो इट मीन्स दैट वो आया और चला गया, so that is considered as a bounce rate. Okay, and there are different things that they consider, a timing as well as whether they have visited multiple pages or not. Okay, that is how bounce rate is calculated. So 75% log has bounced back after coming to the website. And the session duration means how one session, जो 12,000 सेशन है, तो जो 12,000 सेशन हुए हैं वो एवरेज 1 मिनट एंड 54 सेकंड तक एक यूजर रहा है,
ठीक है. So इतना टाइम ड्यूरेशन somebody has spent on your website. So this is really good time period. It should not be in second. अगर मिनट में है तो बहुत अच्छा है, ठीक है. These are the four different elements that you can do. This is how you understand कि कितने लोग आ रहे हैं, आके कितने लोग चले जा रहे हैं, एंड कितने लोग कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट पे रहते हैं, ठीक है. So these are the important parameters that you can understand and you can analyze your website accordingly. On the right side active users दिखा रहे हैं अभी कितने लोग यहाँ पे है, ठीक है. So this is just to understand कि कितने active users हैं. Then there are reports called traffic channel. uh, Traffic channels are different channels. Channels are paid search, referral, direct, organic search, and other. So let me just move to source so that we can see everything in one shot. So as you can see, Google organic, it means that somebody is coming from Google, and this is the data. So the dark blue color, the last color shows that how many people, this many people have come from Google organic. It means that they have come from Google search results. Then direct and none, the second portion of blue color is direct. I mean somebody has opened the website directly by typing the domain name in the address bar. Okay. Then the other blue color is for AdWords and PPC. It means that somebody has come from Google advertisement. Okay. And the next blue color is for referral. Referral means somebody has come from some other website to your website. Okay, and other means they are not able to track के कहाँ से आए हैं, so they have put everything into others. So when Google Analytics won't understand के user कहाँ से आया है तो वो other में add कर देता है. I'll show you in the complete acquisition dashboard, but this is just an overview of this. On the right side, it shows returning users ratio. Okay, how many people are coming back to your website after they left the website. मतलब आज आया, चला गया, फिर वापस वो लोग आ रहे या नहीं आ रहे. अगर वो वापस आ रहे, then it will be calculated as returning visitors. Returning users. Now there are more parameters. This is called active users. It means that daily how many people are active on your website. So this is a day-to-day graph. As you can see on the pop-up, 21 September, monthly active user are 3,354, weekly 739 and daily 89. So this is just to understand कि कितने active users हैं आपकी website पे. On right side there is a user retention. It means that अगर वीक 0 में कोई आया है, लाइक 8 अगस्त से 14 अगस्त तक 753 लोग आए थे, उसमें से सिर्फ 1.8% मतलब 12 यूजर्स ही वापस आए हैं वीक 1 में. देन वीक 2 में उसमें से सिर्फ 6 लोग वापस आए हैं, एंड लाइकवाइज, ठीक है. सो दिस will say that how many people are coming back to your website. If more people are coming back to your website, it means that आपके लिए वो बेनिफिशियल है, बिकॉज लोग ज्यादा वापस आ रहे हैं तो वो इंटरेस्टेड होंगे तभी वापस आएंगे, राइट. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट और आपकी वेबसाइट कितना इंपॉर्टेंस है. देन अदर थिंग्स आर यूजर बाय टाइम. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स है. ये चार्ट वाइज डिफाइन होता है कि कितने लोग कब आए थे. जितना लाइटर कलर है वो लेस विजिटर्स है, और डार्कर कलर है इट मीन्स दैट वो टाइम पे लोग ज्यादा आते हैं. सिमिलरली कंट्री का डिफरेंशिएशन है, सिमिलरली डिवाइस का डिफरेंशिएशन है. आप डिवाइस का डिफरेंशिएशन भी देख सकते हो. पेज वाइज देख सकते हो कि पेज वाइज कितने लोगों ने पेज देखा है. पेज व्यूज मीन्स हाउ मेनी पेज व्यूज आर देयर. सो एक यूजर 5 बार देखे और एक यूजर एक बार देखे, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज अ पेज व्यू, ठीक है. सो पेज वाइज पता चलता है कि कितने लोग विजिट किए थे. इफ यू हैव एडेड पेज वैल्यू तो वैल्यू भी दिखाएगा, बट दैट डजंट मैटर मच. जो हमने वहाँ पे गोल क्रिएट किए हैं वो उसका स्टेटिस्टिक है कि गोल कंप्लीशन क्या है, गोल वैल्यू अगर हमने दी है तो, और गोल कन्वर्जन रेट. व्हेन आई से गोल कन्वर्जन रेट, इट कैलकुलेटेड एज लेट्स से 100 लोग आए हैं, उसमें से 5 लोगों ने आपका फॉर्म भरा है तो वो 5% कन्वर्जन रेट हुआ आपका. सो दैट कंसिडर्ड एज अ गोल कन्वर्जन रेट, ठीक है. विजिटर
वर्सेस गोल. ओके, एंड दीज आर डिफरेंट गोल्स और उसके नंबर्स है कि कितने गोल्स कितने लोगों ने भरे हैं. ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज क्लिक्स एंड रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू यहाँ पे है तो मतलब आपने दिया है तो, अदरवाइज it doesn't matter. So now let's look at all these parameters that is on left side. First is real time. So real time is something where you will understand कि अभी कितने लोग लाइव है आपकी वेबसाइट पे. सो ये जीरो हिट मीन्स अभी वेबसाइट पे कोई नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे सोर्स वाइज, ट्रैफिक वाइज और कीवर्ड वाइज यहाँ पे दिखाता है एक्टिविटी. यहाँ पे पेज दिखाता है कि कौन से पेज पे लाइव. बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है, ठीक है. सो अगर देखना है कि अभी कौन कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, देन यू विल बी एबल टू सी देम ओवर हियर. Then there is a dashboard for audience, where you will be able to see different things. So यहाँ पे you will be able to see कि कितने users हैं. Let me also show you कि यहाँ पे date select कर सकते हो. For example, if I select September, then it will show me the data of September. And there is a different filters called hourly, day, week. If I say week, तो every week wise मुझे users दिखाएंगे. For example, ये week में 488 थे, ये week में 837 थे, ये week में 823 है, and likewise. I can also compare users versus, let's say, session, right? If I select session, then I will see कि कितने user थे और कितने session, right? So there are different parameters that you can compare through this chart: weekly, monthly, and daily. These are the main statistics that you can consider. Users, I already explained what is users. New users means, as I mentioned earlier, कि returning visitor होते हैं. एक बार आया, फिर वापस चला गया और फिर वापस आया, right? तो यूनिक विजिटर कितने हैं और उसमें से भी नए यूजर कितने हैं या फिर रिटर्निंग कितने हैं. As you can see on the right side, there is a chart called new visitor versus returning visitor. So 88% लोग न्यू यूजर है और 11% लोग रिटर्निंग विजिटर है. दिस विल टेल यू कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आते हैं. आई मीन रिटर्न कितने आते हैं. अगर लोग ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन योर वेब्स, इन योर प्रोडक्ट और सर्विस. Then number of session, total number of session, then number of session per user, ठीक है. So user wise 1.42, मतलब एक user average 1.42 session किया है approximately. It's average, that is why 1.42. Otherwise session could be 1 or 2, like it can't be in decimal. Then page views, as I explained, every page, जो भी एक पेज विजिट करता है तो वो 1 पेज व्यू काउंट होता है. एक यूजर 5 पेज व्यूज कर सकता है या एक भी कर सकता है. सिमिलरली पेज पर सेशन, दिस विल अगेन गिव यू एन आइडिया कि क्या हो रहा है. इफ यू होवर दिस, देन यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ पेजेस पर सेशन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. एवरेज सेशन ड्यूरेशन अगेन 3 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एंड 72.54 is the bounce rate. Okay. Then language wise है यहाँ पे, if I select this, then they will show country wise, they will also show city wise, browser, operating system, different options are there. You can just go through the data based on your requirement. क्योंकि वेबसाइट आपकी है, आपको पता करना है कि आपका मार्केट कौन सा है, तो यू कम हियर और आप सिटी देखो कौन से सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, राइट. अगर जो भी सिटी से ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि वो आपका प्राइम टारगेट है और वहां से लोग ज्यादा आ रहे हैं, करेक्ट. सो जैसे भी मतलब आपको आप सोच रहे हो आपके मार्केटिंग के लिए, उस हिसाब से डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा. Then there is another dashboard called acquisition. So now this dashboard is about the source of the traffic. When I say source, there are different source. One is organic search. It means that organically Google में search करके आया है या फिर Bing में search करके आया है, तो भी वो organic search में जाएगा, ठीक है. Direct, it means that somebody has type in the URL of your website directly into the browser. Paid search, it means that Google में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, सर्च एडवर्टाइजमेंट, तो पेड सर्च में आएगा. रेफरल मीन्स थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट से आ रहा है. ईमेल मीन्स ईमेल से क्लिक करके आ रहा है.
सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया से आएगा तो वो सोशल में आएगा, एंड अदर जो ट्रैक नहीं हो पा रहे, ठीक है। और यहाँ पे टॉप चैनल्स और रेशियो दिखाया गया। देयर इज अ यूजर, अगेन यूजर का ग्राफ है एंड कन्वर्जन का ग्राफ है। Now I can change the goal, or I can select all goals so that I can see the overall goals also. Okay. And again, there is a different acquisition behavior and conversion wise तीन statistic दिए हैं, where all this sources wise you will understand कि कितने यूजर आए हैं, कितने न्यू यूजर थे और सेशन थे यहाँ पे है, बाउंस रेट कितना है। आई मीन ऑर्गेनिक सर्च से 82% है, डायरेक्ट से 63% है, पेड सर्च से 82% है, और एवरेज करके उन्होंने 72.54 का रेशियो लगाया है। बट चैनल वाइज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बाउंस रेट है। सो आपको क्या समझ में आता है इससे? तो गूगल से सर्च करके जो लोग आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, उसमें से 82% लोग तो चले जा रहे हैं, मतलब बाउंस हो जा रहे हैं। सो समथिंग इज रॉन्ग। अगर मुझे ये 82% का 60% या 70% में ला दो, इट मीन्स दैट मोर पीपल विल स्टे हियर, और ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक आएगा मेरा, राइट। सो आई कैन ट्राई एंड इम्प्रूव दिस बाउंस रेट सो दैट आई विल गेट मोर एंड मोर टारगेटेड ट्रैफिक। ओके। सो आई कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है अभी। अगर जितने जो भी कीवर्ड पे रैंक हो रहा है और मुझे पता चला कि कोई गलत कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, देन आई शुड remove that page, or I should go ahead and make some changes to those page, because अगर वो कीवर्ड से आ रहा है तो वो रिलेवेंट ही नहीं है मेरे लिए, राइट। तो आई विल रिमूव दैट पेज, और आई विल रिमूव दैट कीवर्ड फ्रॉम दैट पेज। ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बाउंस रेट में ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यू कैन थिंक अबाउट इट एंड बिल्ड अ स्ट्रेटेजी। Why I take an example of organic search? Because when you do SEO, this is very important कि bounce rate आपका कम हो। Average bounce rate could be around 60 to 70%, because many people comes to your website, visit the first page, and they might left. So that will also consider as a bounce rate. Again, conversion is the goal that you have created कि कितने लोग ने contact form भरा है या कितने लोग ने आपकी website से कुछ purchase किया है। तो you currently it shows 10% from the organic search. It means that सिर्फ 100 में से 10 लोग ही आपका फॉर्म भर रहे हैं या आपकी कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। सो ये रेशियो भी यू कैन ट्राई एंड इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग योर वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस, और कन्वर्जन के लिए आप ऑप्टिमाइज करो आपकी वेबसाइट एंड ट्राई एंड इम्प्रूव दैट रेशियो। सो ट्रैफिक चैनल वाइज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस पेड एडवर्टाइजमेंट, ओके। 222 लोग मेरे पास आए हैं, उसमें से 82% तो बाउंस हो गया, राइट। और उसमें से सिर्फ 8% ने फॉर्म भरा है। इट मीन्स दैट अप्रोक्सीमेटली 222 में से 17 या 18 लोगों ने ही फॉर्म भरा है। ओके, दिस इज नॉट गुड। अगर ये रेशियो है और मुझे ये रेशियो 8% से 15% लाना है, तो आई शुड वर्क कि मेरी एड कॉपी कैसी है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कोई टारगेटिंग ऑडियंस में या कीवर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा लाइक दिस, और उसके हिसाब से यू कैन ट्राई एंड एनालाइज योर ऑल द डेटा एंड अकॉर्डिंगली टेक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। जब भी ये आपको आप एनालाइज करोगे, आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना है ताकि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके, ठीक है। Then there is a behavioral data. So for that there is a dashboard again. So you can see page views. Behavioral data, it means that user आने के बाद behave कैसे कर रहा है, right? When I say behave, तो one behavior will be कि वो multiple pages आपका देखेगा, राइट। सो पेज व्यूज आर देयर। यूनिक पेजेस कितने, पेज व्यूज कितने हैं, राइट, वो भी है। एक पेज वो 2 बार भी देख सकता है, राइट। तो यहाँ पे यूनिक पेज व्यूज भी दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद एवरेज टाइम ऑन द पेज इज 3 minutes 25 seconds, and bounce rate, again bounce rate is almost all the dashboard will have, because that way you will understand कि कहाँ पे क्या हो रहा है, okay। And exit is something, how many people have exit your website after visiting the page, right। one page के बाद कितने लोग exit हो गए, वो 53% लोग। So page wise आपको data मिलेगा, and again as I mentioned in the previous acquisition dashboard, you can try and analyze it this way.
And for conversion, there are goals. I already showed the dashboard, but as you can see, different goals you can create, and there will be a total goal completion ratio over here. You can, if you have added the value with the goal, then you can track the revenue also. And goal conversion rate means 12% is the goal conversion rate in totality. So 100 में से सिर्फ 12 लोग ही आपका फॉर्म भर रहे हैं, राइट? So this ratio you can improve slowly and steadily by improving your website. Okay, so you can see goal completion by page. ये गोल completion का पेज का है, एंड देन सोर्स एंड मीडियम भी है, लाइक गूगल ऑर्गेनिक से कितने आए, डायरेक्ट कितने आए हैं, रेफरल से कितने आए हैं, एडवर्ड्स पीपीसी से कितने आए हैं, एंड लाइक वाइज. ठीक है, यू कैन चेक मोर एंड मोर सोर्स एंड मीडियम, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपकी वेबसाइट. So this is how you can analyze, and this is the main overview of Google Analytics. So now lastly, I would like to show this Google Analytics 4. It is quite different. Is there any question in analytics so far, guys? This is the overview of analytics that you need to understand. There are a lot more data, बहुत सारे data है अंदर, but इतना आप जितना dashboard है उतना भी समझोगे आप, तो then and try and analyze your website accordingly. There are a lot more data you can go and explore. ठीक है, and if you have any question, you can always email me, or you can contact me for any question you may. So अब तक कोई question है guys? I would like कि अगर कोई question है तो I can address it right now before I move to analytics 4. Any questions? सर, Yes. जो कीवर्ड्स होते हैं, लाइक हमने एक सेट ऑफ कीवर्ड्स के लिए अपनी वेबसाइट को देखा, लेकिन उसमें हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो Okay. हम क्या उन कीवर्ड्स को बाद में चेंज कर सकते हैं, लाइक कि हम Of दूसरे course you सेट ऑफ can कीवर्ड? change. Of course you can change your keywords. Of course you can change your keywords. अगर वो keyword, but आप change तभी करो. Result अच्छा है इसलिए change मत करो आप. Change तभी करो जब आपको लगता है कि ये keyword relevant नहीं है. ठीक है, अगर ये चेंज ये कीवर्ड रिलेवेंट नहीं है तो ही वो चेंज करो. रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए चेंज मत करो. रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया. ठीक है, तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, तो कीवर्ड चेंज करो, बट प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की ट्राई करो, rather than changing the keyword कि ये keyword नहीं rank हो रहा तो मैं दूसरा लगा देता हूँ. Don't do that. I hope you got the answer. यस सर, यस सर. Okay. All right, let me show you quickly like analytics 4. So there are in reports there are different things. One is the dashboard, user, new user, average time. It is almost the same as the last analytics that I showed you. The data is not available here, but I'm just showing you. Okay, this is a quite new account. So then this is almost the same. There is no different in this. The report is same in the both analytics version. Then real time, again, the UI is different where you will see the flag, and otherwise data is almost the same. Again, you will see the users, you will see the user by source, you will see the audience. Okay, there are more options than the old analytics, but things are almost the same. जो भी मैंने वहां पे दिखाया है वही यहाँ पे आएगा. I'll show you कि क्या change है. Then again, acquisition overview, user overview, and traffic overview. It is almost the same, just representation is different. Okay, so all data are like user, new user, users in last 30 minutes. ये minute wise दिखाता है, यहाँ पे top countries दिखाता है. Then मीडियम वाइज दिखाता है, जो मीडियम एंड सोर्स है उसके वाइज दिखाता है. यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, सोर्स, मीडियम, कैंपेन. ठीक है, देन ट्रैफिक वाइज दिखाता है कि ट्रैफिक कहाँ से आया है, उस हिसाब से दिखाता है. देन कैंपेन वाइज दिखाता है, अगर कोई कैंपेन आपने ऐड किया है तो वो कैंपेन वाइज भी दिखाएगा. ठीक है, एंड दी लाइफ टाइम वैल्यू है.
Lifetime value is something which if you add the value, like एक lead आई तो उसका $100 है, ऐसा add करते हो, then only you will be able to calculate those values. Okay. Again, user acquisition, things are different. यहाँ पे एक थोड़ा difference है, जो आपको ये सब डेटा ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे देर इज एन ऑप्शन फॉर मीडियम, मीडियम सोर्स मीडियम एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे और बाइफर्केशन मिलेगा वो एनालिटिक्स के जगह पे, सो आपको क्या करना है, आपको जो डिफॉल्ट चैनल है वो तो दिखेगी, बस उसके साथ आपको अंदर का एनालिटिक्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल गूगल ऑर्गेनिक से आया है, बट उसमें ओके गूगल ऑर्गेनिक में इतना सोर्स मीडियम नहीं मिलेगा, बट लेट्स से सोशल मीडिया से आया है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से आया है तो सोर्स और मीडियम भी पता चलेगा कि कौन से सोशल मीडिया से आया है। फेसबुक से आया है तो यहाँ पे वो भी दिखाएगा कि फेसबुक से भी फेसबुक से आया है। अगर फेसबुक से पेड एड से आया है तो फेसबुक स्लैश सीपीसी दिखाएगा। इट मीन्स दैट वो पेड फेसबुक से आया है, राइट। सो लाइकवाइज यू विल गेट मोर एंड मोर बाइफर्केशन इन दिस, ओके। एंड सिमिलरली ट्रैफिक एक्विजिशन वो सेम है, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ से सोर्स से आया है, वो सेम डेटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। एंगेजमेंट ओवरव्यू इज सेम एज द बिहेवियर डैशबोर्ड दैट आई शोन यू, जहाँ पे एवरेज एंगेजमेंट टाइम, एवरेज सेशन पर एंगेज सेशन पर यूजर, likewise there are few more parameters added, otherwise it is almost the same, okay. And there is a new thing called events. When I say new things, event was also there in the old analytics, but यहाँ पे everything is focused on events. So what you can do, you can see is different events. So for example, page view is one of the event for them. अगर आपने गोल बनाया है तो वो गोल completion is one event for them, purchase is one event for them. So they have changed a little bit in terms of presenting the data, otherwise all the data that you are seeing in the old version is remain same, okay. So try and use this analytics. I think you will get all the ideas that I already explained. You just need to understand the parameters कि user क्या है, session क्या है, goals क्या है, bounce rate क्या है, page views क्या है. If you know this, you can use both the analytics. There is no major difference between them. Source क्या है, like Google Organic है, paid search है, social है, referral है, email है, right? If you know all these basics parameter, there is uh, no difference between this analytics and that analytics. Okay, and there are a few more options that is bifurcated. I am not going into it because things are almost the same. I would like you to explore everything once, and I again would request if you have any questions, you can always drop me an email. Okay, I will answer them. I'm dropping my email address once again, but chat is not available. So my email address, I'm just typing over here. If you want, you can note it down. All right, so that's all from my end, guys. If you, I explained all the basics of Google Analytics. These are all the parameters that you need to understand in order to improve your website. There are more to it. There is a lot more advanced things available, but as a beginner, when you start working on your website, I think these are the basic parameter you need to understand. Once you are good with this, I think you can explore more and more things over there. Okay. Okay, I'm open for any question you may have, guys. And yeah, if you have any feedback, you can always share. Yes, sir. Okay, so thank you for the session. Sir, एक doubt था मेरा कि Sure. suppose like in case a person do not have a website and like he's not sure but techie types, but he want to go into marketing. So like where he can practice all these, how we will proceed. I think for that, you have to create a website. And if you don't have a website, I think you can go to free tools like Wix is providing a free website for you. WordPress.com is also providing a free website for you. Okay, so you can just go ahead and try. You don't need to code anything. Okay, you don't need to be technical. आज वेबसाइट बनाना कोई टेक्निकल काम नहीं है, आपको जस्ट गए
साइन अप किया, जैसे आप कोई भी फेसबुक में साइन अप करते हो वैसे ही वहां पे साइन अप करो, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिलेगा, वहां पे जो जो स्टेप फॉलो करते जाओगे आपकी वेबसाइट बनती जाएगी, ठीक है। वहां जाके सिर्फ आपको कंटेंट ऐड करना है, ओके। और जो भी कंटेंट आप ऐड करो उसको ट्राई एंड ऑप्टिमाइज इट, सो एवरीथिंग दैट you do, I think you have to practice, then only you will be able to learn. So website banana is not a technical thing nowadays, you can just create a free using free tools. uh, Okay, sir. Thank you. yeah, okay, any questions guys, any other question? I mean, I hope आपको बेसिक समझ में आया है, एंड देन यू विल गो एंड क्रिएट एन अकाउंट एंड एक्सप्लोर इट विथ योर वेबसाइट। इवन आपके पास वेबसाइट नहीं है तो लाइक आपके रिलेटिव या कहीं पे भी किसी के पास भी बिजनेस है और वेबसाइट है, देन यू कैन आस्क देम टू गिव इट टू यू एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस योर वेबसाइट्स, practice everything on your website, I mean, yeah. Okay, any question or we can conclude the session guys? All right, I think majority of people are leaving, so thank you everyone. I think we can conclude this session. Feel free to email me. Email is there in the chat box. So if you have any question, you can always email me, or you can reach out to me on social media. You can find my name, or you can even find my name on Google and go to my website and just try and contact me. I'll be available. I'll be answering all your emails. Thank you, sir. Thanks for Thank you such a so great much. session. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Bye. Bye bye.